Everybody was willing. सब कोई जितने लोग थे सब तैयार थे. So Tom got out a sheet of paper. तो टॉम एक पेपर लेके कागज लेके आया that he had written the oath on, जिस पेपर पर उसने उस शपथ को लिखा हुआ था, and read it, और वो उसे पढ़ने लगा. It swore every boy to stick to the band. उसमें ये कसम ली गई कि जितने भी लड़के हैं वो उस ग्रुप से स्टिक यानी उस ग्रुप से हमेशा जुड़े रहेंगे. एंड नेवर टेल एनी ऑफ द सीक्रेट्स, और कभी भी उस ग्रुप के रहस्यों को किसी से भी शेयर नहीं करेंगे. वी डिसाइडेड दैट वी वुड बी अ बैंड ऑफ हाईवेमेन. और हमने ये डिसाइड किया, हमने ये निर्णय लिया कि हम सब जो अपना गिरोह बनाएंगे वो होगा हाईवेमेन. हाईवेमेन का मतलब होता है यानी हमारा जो गिरोह होगा उसका काम क्या होगा, वो लोगों को और सामानों को सड़कों पर लूट लिया करेंगे. Ben Rogers said he couldn't get out much. Only Sundays. Ben Roger ने कहा कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है तो वो केवल संडेज को ही, रविवार को ही उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाएगा. They agreed to get together. वो एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए. Agreed यानी सहमत हो गए, तैयार हो गए. And fix a day, और एक दिन बना लिया. As soon as they could, जितनी जल्दी वो ये काम कर सकते थे. And then we elected Tom Sawyer first captain, और तब हम सब ने टॉम सॉयर को अपना पहला नेता चुन लिया. एंड जो हार्पर सेकेंड कैप्टन ऑफ द गैंग, और जो हार्पर को हमने अपने ग्रुप का दूसरा नेता चुना. एंड सो वी स्टार्टेड फॉर होम, और फिर हम घर के लिए चल दिए. माई न्यू क्लोथ्स वर ऑल ग्रीस्ड अप. मेरे जो नए कपड़े थे वो सारे ग्रीस्ड अप यानी पूरे घिस गए थे. एंड क्ले, और उसमें पूरी मिट्टी लग गई थी. एंड आई वॉज डॉग टायर्ड. डॉग टायर्ड का मीनिंग है बुरी तरह से थक जाना, और मैं बुरी तरह से थक गया था. So students, the explanation of this chapter has completed. Now we have to do the exercises of the chapter, but we will continue these exercises. You will write this chapter based exercises in your classwork copy. So at first mention today's date, then number and name of the chapter. After that start the chapter with hard words and then word meanings given in your book. After completing this, note down the exercises as shown in this video. And just remember, while copying these exercises, you can pause this video for your convenience. And all the work must be done in cursive handwriting. Okay, children? So let's start the exercises. First exercise is answer the following question with reference to the context. First, then he said, who's that? Who is the speaker? इस सेंटेंस में स्पीकर कौन है आपको बताना है. एंड द आंसर इज जिम इज द स्पीकर. जिम इज द स्पीकर. नेक्स्ट बी, व्हाई डज ही आस्क द क्वेश्चन? उसने ये क्वेश्चन क्यों पूछा था? Answer, he inquired because he heard noise. C, does he get any responses? क्या उसे उसका कोई जवाब मिला था? No, he does not get any response. Okay, children? Next, question answer. Question 1 is, what did Jim do when he heard a noise? Answer, on hearing a noise, Jim tiptoed down and stood right between Huck and Tom. Next, what happened to Huck when Jim sat down between him and Tom? Answer, when Jim sat down between Huck and Tom, Huck's nose began to itch. It itched till tears came in his eyes.
The itching increased till Huck was unable to stand it. Just then he heard Jim's snore and decided to continue their movement. Next, question third. Describe what the boys saw when they were at the hilltop. Answer. From the hilltop, the boys looked down the village and saw 3 4 lights twinkling where there were sick folk. Stars were sparkling in the sky above their heads. A mile brook river, a mile brook river, brook is misprint here. The correct word should be broad. Broad. Make it correct. Broad. A mile broad river flowed down the village, which was looked still and grand. Okay, next. Fill in the blanks. You will start this from the next page. First is the boys went tiptoeing along a path amongst the trees back towards the end of the widow's garden. Second, Miss Watson's big servant was Jim. Third, Tom and his friends unfastened a small boat and pulled it down the river to a big rock on the hillside and went ashore. Fourth, Tom led his friends to a hole in the hill right in the thickest part of the bushes. Fifth, everyone swore to keep the secret. Sixth, the gang decided to start their band of robbers and call it Tom Sawyer's Gang. Okay, now children, this chapter's explanation part and all the exercises of the chapter are complete. You will complete this chapter in your classwork copy in a very good handwriting. Okay, thank you.